Good morning, students. Students, today I am going to discuss one another application of biotechnology to make plants pest resistance. Or this technique is used to make a plant, or this technique is used to convert a normal plant into a GMO. GMO means genetically modified plant, and this plant is capable enough to protect itself from the infection of pest. Students, I want to tell you that there are several nematodes which infect a wide variety of the plants as well as animals, including in human beings. Means nematodes, there are a variety of the worms or nematodes which are causing different kinds of diseases to the plants as well as the animals as well as the human beings. So today I will discuss especially about a pest, and this pest is basically this pest belongs to uh, a specific plant which is economically very important, and the plant is tobacco plant. As we know that tobacco is dangerous for health, but instead of it, the tobacco provides a lot of or a very great economy to the countries, and this nematode is destroying the crop as well as their roots. So this pest which is causing harm to that particular tobacco plant is known as Melidogyne incognita. So this nematode Melidogyne incognita is basically a nematode, or it's a pest which infects the roots of the tobacco crop, and reduces the production of the tobacco. So we are considering it as a pest, and we have to eradicate it to improve the production of the tobacco plant. So the technique or the strategy which is used to prevent the infection of this Melidogyne incognita is called as RNA interference, or it is in short it can be referred as RNAi. Here RNA and I means interference. Okay, RNAi takes place in the eukaryotic organism as a method of the cellular defense. So in most of the eukaryotic organisms, this RNAi or RNA interference technique can be used for the cellular defense or for the defense against the various kinds of pest or disease causing agents. So students, I want to tell you that what happens or what is this strategy, and how can a tobacco plant can be prevented from such kind of pest Melidogyne incognita. Actually students, RNAi is a method which involves silencing of a specific mRNA due to the complementary double stranded RNA molecule, and that binds as well as prevents the translation process of mRNA. Means I mean to say that while a pest, which is pest Melidogyne incognita, when this pest is going to infect the roots of tobacco plant, so why the pest is infecting roots? I have one answer. While it is going to infect, definitely it will infect that particular plant for its food. तो यानी कि ये जब रूट को परफोरेशन करेगा, then it will suck out some sap, and this sap will be used as its food, यानी वो प्लांट से फूड ऑब्टेन करेगा। तो और जब फूड ऑब्टेन कर रहा होगा तो एट द सेम टाइम इट विल रिलीज सम mRNA into the plant, and this mRNA which is released by that particular pest or Melidogyne incognita, this mRNA will definitely show adverse impact on the plant. तो वाई shouldn't we go for the silencing of this mRNA? तो हम ऐसा कोई उपाय क्यों ना करें जिसकी वजह से कि mRNA जो ये बन रहा है यही साइलेंट हो जाए, यही साइलेंट, इसको हम साइलेंट कर दें। तो इसी प्रोसीजर को बोला जाता है RNA साइलेंसिंग। तो एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है कि जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट यहाँ पर है टबैको, यानी टबैको के प्लांट के अंदर वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ सच काइंड ऑफ जीन which gene is producing the complementary RNA of that particular RNA which is produced by the pest। कहने का मतलब ये है कि प्लांट को नुकसान कब पहुंचेगा? जब जब पैरासाइट प्लांट्स की बॉडी में परफोरेशन करेगा, उससे अपना फूड लेगा, और फूड लेने के साथ साथ अपना mRNA प्लांट के अंदर रिलीज़ करेगा। अब वो mRNA ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेशन करेगा, कुछ ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो प्रोटीन प्लांट को नुकसान पहुंचा रही है। तो इफ़
वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ सच काइंड ऑफ जीन ऑलरेडी इन द प्लांट। अगर हम प्लांट की बॉडी के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर, प्लांट के डीएनए के अंदर एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दें, वो जीन जो एमआरएनए बनाता हो, वो एमआरएनए क्या हो, जो आपका जो पैरासाइट एमआरएनए बना रहा हो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो क्या होगा, दोनों के दोनों एमआरएनए आपस में बाइंड होंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। तो जो आपका पैरासाइट का आरएनए था वो कोई काम का ही नहीं रहेगा, बिकॉज डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज नॉन फंक्शनल। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर टेक्निक। सो आई एम वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आरएनएआई मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए, यानी स्पेसिफिक एमआरएनए को यहाँ पे साइलेंट कर दिया जाता है। हाउ? Due to the complementary double stranded dsRNA means double stranded RNA molecule and that binds and prevents translation of the mRNA। तो आपका जो पेस्ट का mRNA है वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फॉर्म इन्फेक्शन ऑफ द वायरसेस हैविंग RNA जीनोम और ट्रांसपोजोन्स। अब इस प्लांट के अंदर इस कॉम्प्लीमेंट्री RNA को डाला कैसे जाए, कैसे उस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया जाए, तो उसके लिए आपको पता है कि वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, और इन केस ऑफ द प्लांट्स द वेक्टर विच इज़ मोस्टली यूज्ड इज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस और ट्रांसपोजोन्स का यूज़ करके हम अपने डिज़ायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं होस्ट प्लांट यानी टबैको प्लांट के अंदर। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर कैन बी यूज्ड which can carry the nematode specific gene into the host plant, means host plant means tobacco plant। तो initially what we have to do, we have to select one tumefaciens bacteria, और ये जो बैक्टीरिया होता है you know very well that इसके पास जो प्लाज्मिड होता है इसको बोलते हैं टी प्लाज्मिड, एंड इसके पास एक प्रॉपर्टी वाला जीन होता है जो कि प्लांट्स में ट्यूमर कॉज करता है। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस ट्यूमर कॉजिंग जीन फ्रॉम द टी प्लाज्मिड एंड वी इंस्टीड ऑफ इट वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ जीन of our interest, and then we have to allow this bacteria to infect the plant। जब बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो क्या करेगा, अब उसके पास इन्फेक्शन वाला जीन तो बचा नहीं, उसकी जगह पे आपने अपने डिज़ायरेबल करेक्टर वाला जीन डाल दिया जिसके पास की कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाने की प्रॉपर्टी थी। नाउ अब आपका जो प्लांट है यानी होस्ट प्लांट जो है इसके पास एक ऐसा जीन पहुंच चुका है जो एंटीसेंस और सेंस आरएनए बनाता है और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रहता है, तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जैसे ही कोई आपका होस्ट के ऊपर कोई इन्फेक्शन होता है, इफ़ एनी नेमेटोड इज़ गोइंग टू इन्फेक्ट, तो ऑलरेडी उसके पास प्लांट के पास होस्ट प्लांट के पास पहले से एक ऐसा जीन है कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाता है। तो वाइल द what I have to say that while any parasite or any pest is going to infect the host tobacco plant and it will release its mRNA, so at the same time the plant will also produce the complementary RNA, and the complementary RNA will bind with the parasite RNA and it will form double stranded RNA, and the RNA of the parasite will become inactive, or it will not perform or it cannot harm the plant too। ठीक है। नाउ द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव, अब कंडीशन सूटेबल नहीं बना पाएगा, हॉस्टाइल कंडीशन इन हॉस्टाइल कंडीशन हो जाएंगी उसके लिए। तो जब उसकी प्रोटीन काम ही नहीं कर रही, उसका एमआरएनए काम ही नहीं कर रहा, तो जो आपका नेमेटोड है वो प्लांट के अंदर अब सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। अब कर ही नहीं पाएगा तो ट्रांसजेनिक होस्ट है वो अपने आप खुद को प्रिवेंट कर लेगा फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट। सो इन दिस वे this method RNA silencing or RNA interference is used as a biopesticide method, we can say that, or it's a method in which we can convert a host plant into a GMO plant, and it can prevent itself by producing a kind of RNA, complementary RNA, and the process is called as RNAi or RNA interference। I hope so you understood the concept। Once again I will meet you in the next video, till then thank you, bye bye and have a nice day।